Okay, class, good afternoon. So welcome to day 12. So in today's session, we are going to cover handling of error in machine learning and data structures. And this topic will be covered by Gurbani and Gaurav. And the second topic is advanced Kaggle that will be covered by Ishkaran Singh. So before moving forward, there is a resource of the day. Here I shared some talk with the grandmasters of Kaggle. So there are nearly 9 videos are there, and the time duration for these videos vary from 10 to 20 minutes. So I request all of you, please go through these videos, just listen his or the grandmaster's experiences and try to implement ki what exactly they are saying. कौन से resources they वो follow कर रहे हैं, क्या उनका schedule है, how to deal with the problem. So lot of experiences there. तो यही चीज आज ईश्कर यहाँ पे शाम को एक्सप्लेन करने वाला है सेशन के बाद. And I hope everybody is submitting their daily task. Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Perfect, perfect. So let's start the very first session, that is handling in error in machine learning and data structures. So by Gaurav and Gurbani. So if you have any question, query, please write in the chat. So we will take care for that. So Gaurav. Good afternoon, guys. I am Gaurav, fourth year student pursuing CSC from Thapar Institute. I have gained a decent amount of knowledge in my 3 years of engineering, and I am here to share some of my knowledge with you guys. अब मैंने बोल तो दिया कि मेरे पास नॉलेज है, अब इसका प्रूफ क्या है यार. मैंने 3 इंटर्नशिप्स की हैं एंड तीनों मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे बेस्ड थी, तो अच्छा खासा उसमें काम किया, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. नाउ कमिंग टू गुरबानी. I'm Gurbani Kaur. I'm also a fourth year student in Thapar Institute only. And I have been in Flynovate as a cloud engineer, and I had been working on deep learning models too there only. So today we'll be starting with a topic now, that's handling errors in machine learning and DSA. So starting right away with machine learning, I hope every one of you is familiar with PyCaret and Teachable Machine now. So you guys know what machine learning is, and you know various models shown on the screen. So you can see the last row. You must be familiar with decision trees, support vector machine, random forest. And if not, no issues. You'll be regularly working with these, and definitely soon you will be knowing which type of data set requires which kind of model. So as I earlier said, that machine learning you are already familiar with, but when we talk about accuracy and when we talk about errors, like why am I covering a topic on accuracy in error handling? The point is that when we select the model, there are chances of errors while selecting the best parameters. And what parameters are? So, of course, we all are familiar with PyCaret, and PyCaret gives us top 5 models. Am I right? According to our code. So, since it gives us top 5 models, we have definitely observed that after the name of the model, they mention some of the parameters, the best parameters which give the best accuracy. So to the ones wondering what parameters are, see, the screen shows you some of the parameters of decision tree. Hyperparameter tuning is to choose the best parameters for any of the model we are using. So the best parameters for decision tree will include a certain amount of value for maximum depth, certain value for criterion. And since we have many options for maximum depth and many options for criterion and many other parameters, we need to find the best combination. I guess everyone is familiar with what permutations are. So, Yes, ma'am. So yeah, so now you know that as you can see, you need to find the best combination, and for that you need to apply various permutations to the model. Now to select the best model and to apply permutations, the first method we can choose will be applying a for loop to check all the combinations. Won't it be heavy? And of course, you can ask, why not PyCaret? We are working on PyCaret, so just why not copy paste the best parameters from there? Of course, we can do.
but at certain amount of time, PyCaret to a certain data level will definitely fail. Will not fail, but it will actually take 3 to 4 hours to run and require a large computational power of the computer, which may not be there in our GPUs and SSDs, of course. So coming on to hyperparameter tuning, not using for loop, of course, by using a better technique that we call grid search CV. And now we'll be looking forward to grid search CV. So if anybody is having any issue till now, any doubt till now, doubts are readily welcomed. Hope you guys understood. Yes, ma'am. सो यार अब ग्रेड सर सीवी का बेसिक समझ लिया कि क्या कर रहे होंगे. सारे गिटहब रेपो में आ जाओ, हम उस पर काम कर रहे होंगे. गिटहब रेपो ओपन कर लो. जो फर्स्ट लिंक है ग्रेड सर सीवी, इसको ओपन इन कोलैब कर लो एक बार सारे. फर्स्ट इन द गिटहब रेपो. अगर किसी का कुछ रह गया हो तो यार चैट में मेंशन कर देना. किसी को कोई डाउट हो किसी पॉइंट पे, डू मेंशन इन चैट. तो ओपन इन कोलैब कर लो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, मैंने ओपन इन कोलैब कर लिया है. अब यार ग्रेड सर सीवी पे हम कैसे काम कर रहे होंगे? हम एक एक सेल रन कर रहे होंगे और उसके आउटपुट समझ के उसका कोड समझ रहे होंगे कैसे होता है. और कुछ टॉपिक्स आएंगे बीच में जो इवेंचुअली हमें ग्रेड सर सीवी समझने में हेल्प कर रहे होंगे. तो ठीक है, जो टॉपिक आएगा ये मत समझना है कि ग्रेड सर सीवी से रिलेटेड है. तो सबका ओपन हो गया तो फाइल में जाके सेव अ कॉपी एंड ड्राइव कर लो. चेंजेस कर सकोगे अगर कुछ करने होंगे ऑन द पॉइंट. तो सारे एक बार फाइल पे क्लिक करके सेव अ कॉपी एंड ड्राइव कर लो एंड देन कनेक्ट. सो आई होप सबने खोल लिया है और सेव अ कॉपी एंड ड्राइव भी ओपन कर लिया है. तो मैं फर्स्ट सेल रन कर रहा हूँ. फर्स्ट सेल में यार क्या हो रहा है? कुछ नहीं है. हम सीधा आइरिस डेटा सेट लोड कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल लाइब्रेरी से. डेटा सेट लोड हो गया. अब डेटा सेट लोड हो गया बट थोड़ा रीडेबल फॉर्म में नहीं है. तो रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. सॉरी. तो आइरिस डेटा सेट है एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट है. इसमें क्या हो रहा है? 4 फीचर्स हैं इसके: सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ एंड पेटल विड्थ. और 3 क्लासेस हैं इसकी कि हमें इन 4 फीचर्स में ना अपना फ्लावर प्रेडिक्ट करना है. कौन सा? सेटोसा फ्लावर, वर्सिकुलर फ्लावर और वर्जिनिका फ्लावर. अब हमने इसमें सिर्फ 47 से 150 रोज आउटपुट करवाई थी. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलम, यार अभी हमने ना एसक्यूएल से डेटा सेट उठाया. तो ना एक बार डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद ना उस पर बहुत ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग हो रही होती है डेटा पे. बट इस केस में क्यों नहीं हो रही है? इस केस में हमने सीधा एसक्यूएल से उठाया तो डेटा सेट ऑलरेडी बहुत क्लीन है. नहीं तो एक्यूरेसी इंप्रूव करने के 2 स्टेप होते हैं. एक तो यार डेटा इतना अच्छा प्री प्रोसेसिंग कि हमें हमारी एक्यूरेसी उसी में कम ना हो रही हो. दूसरा होता है कि यार हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लें, मॉडल अच्छा सिलेक्ट कर लें. 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमारी एक्यूरेसी में डिपेंड कर रही होती है. सो गोइंग टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. अब यार इसमें टेस्ट साइज 0.3 मैंने डिक्लेयर किया. इसका ये है कि 30% हमारा टेस्टिंग डेटा है, 70% ट्रेनिंग डेटा. जनरल हमारा यही चल रहा होता है, 75 ट्रेनिंग 25 टेस्टिंग. तो 70-30 रेशियो इज आल्सो गुड. मैंने ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लिया. एक बार ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लिया उसके बाद हम अपना मॉडल का इन्फ्रेंस मॉडल का इंस्टेंस लोड कर रहे हैं. अब यार ये कौन सा मॉडल है? एसवीएम क्या है? सपोर्ट वेक्टर मशीन. अब इसके जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके 3 पैरामीटर्स हैं. क्या क्या पैरामीटर्स हैं यहाँ पे? कर्नल है, सी है, अब गामा है. अब आप कहोगे यार सर हमें तो इसके बारे में पता नहीं है. क्या करना है अगर आपको कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता? सीधा एसक्यूएल पे गए. ठीक है, जैसे एसवीएम क्लासिफायर. मैंने एसवीएम क्लासिफायर के बारे में पढ़ना था क्या चीज़ है. मैं सीधा एसक्यूएल पे गया, एसवीएम क्लासिफायर सर्च कर दिया. ऐसे थोड़ा नेट स्लो है. यार जो फर्स्ट लिंक है वो आपने ओपन कर लिया. मशीन लर्निंग में क्या हो रहा होता है कि हम ज़्यादातर कोड ना कॉपी कर देते हैं
क्योंकि देखो मॉडल का जो कोड है इंस्टेंस लोड करने का वो हमारे पास पड़ा है, बट इस मॉडल में हम पैरामीटर्स कैसे चेंजेस कर रहे हैं, अपने कोड को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, वो हम पे होता है, वहाँ पे दिमाग लग रहा होता है। जैसे यार देखो ये इंस्टेंस है, इसमें हमारे हमने 3 पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे, बाकी सबका क्या हो रहा है, बाकी सब पैरामीटर्स में ना ये डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स, इसके सारे पैरामीटर्स बताए हमारे। अब हर मॉडल के 10 से 12 पैरामीटर्स होते हैं, 10 के वो सारे मेंशन होंगे। एसक्यूएल की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेना, ठीक है। तो अब देखो सी पैरामीटर क्या है, इट्स अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर। अब वो क्या चीज़ होती है वो भी आगे दिया हुआ है, अगर आपको नहीं पता होता तो आप जनरली ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो, अगर कोई मॉडल का कोड कॉपी करते हो तो बेसिक पता होना ज़रूरी है ताकि आप उसके कोड में चेंज कर सको। तो यहाँ पे कर्नल में बताया कि बस यही 5 वैल्यूज चलेंगी, और गामा में बताया सिर्फ यही 2 वैल्यूज चल सकते हैं। तो जैसे 10-12 मॉडल, 10-12 पैरामीटर, कुछ 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जो मेन एक्यूरेसी पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं। तो इस केस में हमारे गामा वैल्यू, कर्नल वैल्यू और सी की वैल्यू होगी जो हमारी मॉडल की एक्यूरेसी पे मेन इफेक्ट डाल रही होगी। तो इस कोड में क्या हो रहा था, हमने एसपीएम मॉडल का इंस्टेंस लोड किया है अपने मॉडल वेरिएबल में, एंड देन इस लाइन में हमने उसको ट्रेन किया, एंड फिर हम ट्रेनिंग टेस्ट पे ट्रेन कर रहे हैं, एंड ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन कर रहे हैं, टेस्टिंग डेटा से एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। तो या एक्यूरेसी चेक करते हैं कितनी है, 93, प्रेटी गुड। अब हो गया काम? नहीं। दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत देखो यार, मान लो मैं अपने डेटा को फिर से ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया एंड फिर से मैंने अपना मॉडल रन किया, एक्यूरेसी चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो रही है? मैंने यहाँ पे रैंडम सेट नहीं डिफाइन किया है। एक बार रैंडम सेट डाल दिया मैंने, कुछ भी इंटीजर डाल सकते होते हो, उससे नंबर ऑफ रोज का जो इंडेक्स ट्रेनिंग डेटा में जा रहा होता है वो फिक्स हो जाता होता है। अब देखो 0 पे 97 आ रही है, अब मैं जितनी बार मर्जी रन कर लूँ एक्यूरेसी चेंज नहीं होती है, बट स्टिल अभी भी मुझे कैसे पता है ये बेस्ट एक्यूरेसी दे रहेगा नहीं। मैं रैंडम स्टेट चेंज करूंगा, ऑब्वियसली ट्रेनिंग डेटा चेंज हो रहा है, तो मेरी मॉडल की एक्यूरेसी देखो 1। अब 1 क्यों आई है, कैसे आई है? बहुत ही ज़्यादा क्लीन डेटा है। हर बार ट्रेनिंग डेटा डिफरेंट जा रहा था, कुछ ना कुछ क्लासेस के लिए कम डेटा जा रहा था तो उनकी एक्यूरेसी कम हो रही थी, बट बाई चांस 42 रैंडम स्टेट 42 पे हमारी एक्यूरेसी बन रही है। तो इस चीज़ से कैसे डील करना है? की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है यार? पीपीटी में देख लो, पीपीटी का लिंक नीचे ना रीडमी फाइल में, अगर किसी को पीपीटी ओपन करनी है, पीपीटी लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है। 8 पॉइंट के बाद हमारी रीडमी फाइल है, तो यहाँ पे पीपीटी का लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। एंड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जनरली के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में जो है ना वो हम 5 फोल्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। फोल्ड्स क्या है, हम अपने डेटा को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको 5 फोल्ड्स बोला है। अब इससे क्या होता है, हम हर बार एक फोल्ड को अपने टेस्टिंग डेटा में डालते हैं, बाकी के 4 फोल्ड हमारे ट्रेनिंग डेटा में जा रहे हैं। इसका भी क्या फायदा हो रहा है? इससे क्या हो रहा है कि हर डेटा एक बार ट्रेनिंग में जा चुका है और हर डेटा एक बार टेस्टिंग में जा चुका है। तो यार 5 बार टेस्टिंग का डेटा लग हुआ है, तो 5 बार डिफरेंट एक्यूरेसी आएगी, तो हम 5 एक्यूरेसीज निकालेंगे, और जनरली जो आउटपुट दे रहे होते हैं वो इनका मीन दे रहे होते हैं। जैसे हमारी क्लैब नोटबुक में ये देखो, क्रॉस वेल स्कोर, दिस इज फॉर क्रॉस की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसमें क्या क्या हुआ है, एसवीएम का मैंने अपना मॉडल डाला है, उसके पैरामीटर्स डाले हैं, अब पूरा फीचर्स डाले हैं, पूरा टारगेट डाला है, एंड देन CV इक्वल टू 5। व्हाट इज दिस CV इक्वल टू 5? दिस इज क्रॉस वैलिडेशन इक्वल टू 5। यही है जो हमारे डेटा को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 5 एक्यूरेसीज दे रहा होगा। देखो मैंने एक्यूरेसीज को स्कोर्स एरे में प्रिंट करवाया है, एंड मैं उनका मीन निकाल रहा हूँ। 3 बार 1 नहीं है एक्यूरेसी, बाकी बार डिफरेंट आई, और एवरेज 97.3 आई है। चलो ठीक है, एक बार ये आ गई है, बट अभी तक किसी को कुछ डाउट हो? नो डाउट, ठीक है। अब यार यहाँ पे ना मैंने इन पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पे कर्नल की लीनियर थी, C की 10 थी,
गामा की ऑटो थी। मैं क्या चलो इनको चेंज करके देखता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कर्नल की वैल्यू चेंज की है, एक्यूरेसी 98 हो गई। अब और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे, मैंने कहा चलो एक और के लिए ट्राई कर लेता हूँ। एक्यूरेसी 96 आ रही है। यार अब मैं इतने सारे सेल्स थोड़ी बनाऊंगा, अगर मुझे 10 कॉम्बिनेशंस के लिए ट्राई करना है तो 10 सेल थोड़ी बन जाएंगे। इसको थोड़ा इजी कोड में, थोड़ा छोटे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कर्नल्स नाम की लिस्ट बनाई जिसमें हमने जो अपने पैरामीटर्स मुझे चाहिए, पैरामीटर्स की जो वैल्यू चाहिए वो डालता हूँ कर्नल के लिए। एंड मैंने सी नाम की लिस्ट बनाई, उसमें जो मुझे सी की वैल्यूज चाहिए मैंने वो डाल दी। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप रन करता हूँ कि यार आरबीएफ की हर वैल्यू ले लेना, सी की हर वैल्यू डाल के देख लो हमारे मॉडल में, एंड सेम देन लीनियर की हर वैल्यू के लिए सी की हर वैल्यू डाल दो। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 into 3, 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 6 बार हमारा मॉडल रन हो रहा होगा और हर बार क्रॉस वैलिडेशन हमारी 5 बनी है। हर बार 5 एक्यूरेसीज निकल रही होंगी और उनका मीन आ रहा होगा, एवरेज स्कोर आ रहा होगा। अब मैं उन 6 कॉम्बिनेशन की एक्यूरेसी, मीन एक्यूरेसी प्रिंट कर रहा हूँ। जब कर्नल की वैल्यू आरपीएफ की और सी की वैल्यू 1 थी, 98 एक्यूरेसी आ रही है, बहुत अच्छी है। सेम आरपीएफ 10 पे, जब कर्नल की वैल्यू आरपीएफ और सी की वैल्यू जब 10 थी तब भी 98 एक्यूरेसी आ रही है, दैट्स आल्सो गुड। सेम फॉर दिस केस 96 आई है। अब यहाँ पे कर्नल की वैल्यू नहीं आती बट सी की वैल्यू 1 थी, 98 आ रही है। 6 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, 66 एक्यूरेसी आ रही है। यार अब ठीक है, गुड है, सही चल रहा है। इसमें अगर दिक्कत आती है तो क्या करेंगे, उस पर बाद में आते हैं। बट स्टिल यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को अगर कुछ डाउट हो तो चैट में लिख देना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मान लो या 10 पैरामीटर्स हैं और 10 पैरामीटर्स की 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, 10 पैरामीटर्स मतलब मैं 10 नेस्टेड लूप्स लगा रहा हूँ, एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप, फिर एक और फॉर लूप। कोड की रीडेबिलिटी ना थोड़ी कम हो जाएगी 10 फॉर लूप्स लगा। यही सेम काम हम ग्रेडसर सीवी के थ्रू कर सकते हैं। ग्रेडसर सीवी थोड़ा कोड की रीडेबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर देता है। अब ग्रेडसर सीवी का क्या सीन है, सेम एसकेलान से ग्रेडसर सीवी इंपोर्ट किया, ग्रेडसर सीवी का इंस्टेंस बनाया, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, अपना मॉडल डाल रहा हूँ एसवीएम, और उसकी जो गामा पैरामीटर की वैल्यू है वो मैं फिक्स कर रहा हूँ ऑटो। एंड जो पैरामीटर्स मैं चेंज करना चाहता हूँ उनकी वैल्यू मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ सी की ना 1, 10 और 20 की वैल्यू चेक करनी, और इसका हर कॉम्बिनेशन ना कर्नल की आरबीएफ और लीनियर वैल्यू के साथ चेक कर। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, 6 कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, इसकी 2 वैल्यूज और इसकी 3 वैल्यूज। सेम वही जो हम लूपिंग के साथ कर रहे थे। यहाँ पे अगर मैं 10 पैरामीटर डाल दूंगा तो थोड़ा कोड की रीडेबिलिटी बढ़ रही है। अगेन क्रॉस वैलिडेशन 5 है, इसमें हम अपने ग्रेड सर सीवी पे ट्रेन कर रहे हैं एंड देन रिजल्ट्स आउटपुट दे रहे हैं। अब यार रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, रीडेबल फॉर्म में है। तो रीडेबल फॉर्म में लेके आने के लिए क्या कर रहे होते हैं, डेटा फ्रेम में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपने जो भी आउटपुट होती है। ठीक है, डेटा फ्रेम में देखिए यार, बट अभी भी इतने सारे कॉलम हैं। मेरे काम के सिर्फ 3 कॉलम दूंगे यहाँ पे। कौन से 3 कॉलम दूंगे, पैरामीटर सी की वैल्यू, जो सी पैरामीटर था उसकी क्या वैल्यू थी, कर्नल पैरामीटर की क्या वैल्यू थी, और इनका मीन एवरेज स्कोर क्या आ रहा था, यहाँ पे दिया हुआ है। जो सेम काम लूपिंग कर रही थी यहाँ पे बहुत इजी वे में हो रहा है, इतना बड़ा कोड नहीं करना पड़ रहा है। अगर 10 पैरामीटर्स होंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। पैरामीटर की सी की पैरामीटर की वैल्यू ये थी, कर्नल की आ गया, और जो टॉप 3 एक्यूरेसीज थी वो यहाँ पे थी। ये था हमारे पास डेटा फ्रेम है, बट अगर मुझे पूरा डेटा फ्रेम नहीं देखना है, मैं चाहता हूँ कि यार जौन से पैरामीटर्स ने बेस्ट एक्यूरेसी दी थी ना मुझे वो दिखा दो। वो कह रहा है जब सी की वैल्यू 1 थी और कर्नल की वैल्यू आरबीएफ थी, ये मुझे बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है। एंड बेस्ट एक्यूरेसी क्या थी, उसके लिए मेथड है कि यार बेस्ट एक्यूरेसी 98 थी। अब एक एग्जांपल ले लो यार कि तुम्हारा ना ये फ्रेंड है, ग्रेड ग्रेड से भी तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा सारा काम करता है, बट कहीं ना कहीं जाके दिक्कत दे देगा। दिक्कत जाके कहाँ देगा, जब डेटा बहुत हैवी है, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको रन होने में ना यार बहुत टाइम लगेगा।
3 से 4 घंटे भी ले लेगा। तो यार किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड के पास जाओगे। तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे कौन है? रैंडमाइज सर्च सी भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है कि क्या कर रहा है। तुम्हारे 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 6 में से ना मान लो पैरामीटर 3 डाला है, तो 6 में से कोई भी रैंडमली 3 कॉम्बिनेशन उठाएगा और उनकी एक्यूरेसी देगा। तो जो हम जनरल कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे होते हैं वो 100 तक के भी जा सकते होते हैं। तो उसमें से मान लो मैं कोई भी 10 कॉम्बिनेशन की एक्यूरेसी देखना चाहता हूँ, तो उसमें क्या कोड होगा? एसक्यूएल से हम रैंडमाइज सर्च सी भी लोड कर रहे हैं एंड देन सेम मॉडल डाला, मॉडल में अंदर गामा की वैल्यू फिक्स कर दिया, बट फिर से वही टी पैरामीटर की वैल्यूज और कर्नल पैरामीटर की वैल्यू भेज रहा हूँ। क्रॉस वैलिडेशन यहाँ पे भी 5 है। कितने कितने मैं रैंडम कॉम्बिनेशन देखना चाहता हूँ? 2, टोटल 6 है, बट ये रैंडमली कोई भी 2 उठाएगा। फिर से ये कहाँ पे हमें हेल्प कर रहा होगा? डेटा बहुत हैवी है, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा और पैरामीटर्स की वैल्यूज बहुत ज़्यादा है जिनके लिए हमें चेक करना है। तो रन किया, सीधा डेटा फ्रेम में कन्वर्टेड होके आ रहा। अब इसने अभी देखो हमें बेस्ट एक्यूरेसी नहीं दी। कम चांसेस होते हैं कि हमने मतलब बराबर चांस होता है कि बेस्ट एक्यूरेसी दे पाएगा, उसके पैरामीटर्स दे पाएगा कि नहीं। रैंडम सर्च सीवी में 2 बार 2 इंस्टेंस रन हुए थे, बट किसी ने बेस्ट एक्यूरेसी नहीं दी है। ग्रेड सर्च सीवी में हमारे 6 के 6 जो सॉरी 6 कॉम्बिनेशन रन हुए थे और उसमें टॉप की एक्यूरेसी मिल रही थी, बट इसमें रैंडमली 6 में से 2 कॉम्बिनेशन रन हुए हैं, उसमें हमें बेस्ट एक्यूरेसी नहीं मिली है। अब क्या पता अगले इंस्टेंस में मिल जाए, स्टिल नहीं मिली। ये देखो यार, अब चांस है, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं? पाई कैरेट यूज़ कर रहे होते हैं। पाई कैरेट रैंडम से सी भी यूज़ कर रहा होता है, उससे जैसे आपको टॉप के 5 मॉडल्स मिल गए हैं। अगर उसके टॉप के 5 मॉडल्स मिल गए हैं, अब उन पांचों मॉडल्स पे आप क्या करोगे? ग्रेड से सी भी लगा के उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर लो। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जब हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी 0.1 से भी बढ़ा पाते हैं ना, तो वो भी काफ़ी मेजर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पाई कैरेट प्लस ग्रेड सी का यूज़ करना है। पाई कैरेट ने 5 मॉडल्स दिए टॉप, उन पे ग्रेड से भी लगाओ, उनकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो और वो 5 मॉडल्स पे ना इंसैम्पलिंग टेक्निक लगा दो। अब इंसैम्पलिंग क्या होता है ये आपको खुद पढ़ना है, उसका कोड कैसे करना है आप खुद ढूंढो यार, उस पर आपको खुद काम करना है, खुद लर्न करो उस पर। अब ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सर हम्म सर 7.2 स्टेप में जब हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है 3 पैरामीटर्स को, यप तो इसमें जो फर्स्ट 3 हैं वो तीनों ही सेम एक्यूरेसी दे रहे हैं, तो जब सिलेक्ट किया तो सिर्फ फर्स्ट वाला क्यों सिलेक्ट हुआ है? क्योंकि आंसर मे तो तीनों बी से सेम आ रहा है। 1 सेकंड यार, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन पहले आ रहा था, इसका कॉम्बिनेशन पहले बना है लूपिंग के अकॉर्डिंगली। डाउट क्लियर है यार? अगर नहीं क्लियर है तो बता दो। नहीं सर क्लियर। वही है ना, तो जनरली अगर तुम ये प्रिंट करवाते हो बेस्ट पैरामीटर्स, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि उसके जो नीचे वाले 2-3 कॉम्बिनेशन थे वो भी सेम दे रहे थे कि नहीं। अब तीनों पे सेम एक्यूरेसी आई है, तो मैं बताता हूँ जनरली काम कैसे चल रहा होता है। एक बार में अगर मुझे सी की 6 वैल्यू के लिए चेक करना है, तो मैं एक बार में 6 वैल्यूज में डाल रहा था। मैंने एक बार 3 वैल्यू डाली, उनके लिए चेक किया, तो मैंने देख लिया यार सी की ना जो 1 वैल्यू है उस पर ज़्यादा आ रहा है, तो अब मैं सी की यही 3 वैल्यूज रहने दूंगा। कर्नल की जो बाकी की 3 वैल्यूज थी ना, यहाँ पे वो चेंज करके डाल दूंगा, क्योंकि ये डेटा बहुत छोटा है, इस पे जल्दी रन हो रहा है। हैवी डेटा पे तुम्हें 2-3 घंटे लग रहे होते हैं, तो तुम नहीं चाह रहे होते कि एक ही बार में सारे कॉम्बिनेशन रन हो, तो हमारी वो अप्रोच चल रही होती है वहाँ पे। अब रैंडमाइज सर्च सीवी भी देखिए, सिमिलर टू ग्रेड सर्च सीवी है और पाई कैरेट में यही यूज हो रहा होता है, बट इसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम मॉडल एक बार पता लग गया कौन सा यूज हो रहा है हमारे
डेटा पे, तो हम उसकी ग्रेडस्टर सीवी से और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ईयर में ग्रेडस्टर सीवी में ना अपना डायरेक्टली मॉडल भी रन करना चाहता हूँ मैं। 3 मॉडल्स यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, इसमें 3 मॉडल्स मैंने स्टोर करवाए हैं। मॉडल नेम, मॉडल का इंस्टेंस, उसमें मैंने एसवीएम के केस में गामा की वैल्यू 6 की ऑटो, और जो पैरामीटर्स मैं चेंज करना चाहता हूँ वो है कि सी की 3 वैल्यूज और कर्नल की 2 वैल्यूज, कोई जो ऊपर देखा हमने, तो 6 कॉम्बिनेशन बनते होंगे इस केस में। एंड देन रैंडम फॉरेस्ट, उसका मॉडल का इंस्टेंस और उसके पैरामीटर्स की वैल्यू। अब रैंडम फॉरेस्ट में भी 4 पैरामीटर्स होते हैं, इसकी भी आप क्या कर सकते हो, 4 मेन पैरामीटर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी पे इफेक्ट डालते होते हैं। एसकेलान पे जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, सारे पैरामीटर्स देखो। सेम फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें भी हम सी की वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं सिर्फ, बाकी 2 पैरामीटर्स हमने फिक्स कर दिए हैं। तो अब इस पे काम कैसे हो रहा है, ये सिर्फ मेरी डिक्शनरी बनी है, इसमें कुछ ग्रेड सर्च भी या रैंडम सर्च भी नहीं लगा है। अब हम इसमें लूपिंग लगा रहे हैं, इसमें ना हम कॉम्बिनेशंस पे लूपिंग नहीं लगा रहे होंगे, हम अपनी डिक्शनरी पे लूपिंग लगा रहे हैं कि एक बार एसवीएम के लिए चलेगा, एक बार रैंडम फॉरेस्ट के लिए चलेगा, एंड एक बार लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए चलेगा। सो ये देखो, ग्रेडसर सीवी में हमारा मॉडल जा रहा है, मॉडल का इंस्टेंस जा रहा है, और मॉडल के पैरामीटर्स जा रहे हैं, और वही सब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके एक ही लाइन ऑफ कोड में हम आउटपुट दिखा रहे हैं अपने। या तो ये है मॉडल का नेम, उसका बेस्ट स्कोर क्या था और उसके बेस्ट पैरामीटर्स क्या थे। सेम अभी हमने बाय चांस एसवीएम लिया था, बट एसवीएम ही अभी इन 3 मॉडल में से बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है, और उसके पैरामीटर्स ये थे। तो हम फाइनल हमारा मॉडल एसवीएम पे बना रहे होंगे। किसी को कुछ डाउट अभी तक? बस एक लास्ट चीज कि यार कभी भी कुछ मॉडल बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं मशीन लर्निंग का, वो ना इंटरव्यूअर को बताओगे कि मैंने मशीन लर्निंग पे काम किया, मैंने ये मॉडल बनाया था, वो कहेगा हाँ ठीक है, बट अगर तुम यही कहोगे ना मैंने मॉडल को फ्रंट एंड देके उसे इस वेबसाइट पे डिप्लॉय किया हुआ है, उसका ये लिंक है आप चला के देख लो, यार वहाँ पे वैल्यू बढ़ती है, वहाँ पे थोड़ा ये पता चलता है कि इसने अलग काम किया, इसने मॉडल को डिप्लॉय किया, प्रॉपर फ्रंट एंड बनाया ताकि लोग यूज़ कर सकें। तो एक आप वो भी देख सकते हो कि कैसे डिप्लॉय करना है। स्ट्रीमलेट बेस्ट लगता है मुझे डिप्लॉय करने के लिए, स्ट्रीमलेट जरूर सीख लेना, पहले से हमने मेंशन किया हुआ है कोर्स में। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो यार अभी बता दो। ठीक है, देन कमिंग टू गुड मॉर्निंग। So, as we all saw how to use grid search CV and randomized search CV to find the best parameters, I hope the doubt of Kiran is solved. Now, let's move on to how to handle the errors. So since we started with the topic how to handle errors in ML, I would like you all to please go back to the GitHub repository and please open point number 2, Stack Overflow tutorial. Point number 2, Stack Overflow tutorial. Open in Collab. And make a copy of it. Once you're done with making a copy, now this is what we are about to study to know how to use Stack Overflow to handle the errors. Let me get to the point. Stack Overflow is the best website to handle any machine learning error you encounter in all the due course. So, what machine learning includes is just copying a code from somewhere, understanding it, and using it in your project.
Like sir has provided you 500 plus projects on his website. So of course you should be doing a mini projects daily, and sir is also helping you out with major projects. So what do we do while making the projects? We pick up a code and we simply copy paste it. And then we encounter errors. Depends on what are we using the code on, or whether we are running it on Jupyter notebook, whether we are doing it on collaboratory. अब गूगल कोलैब पे जब आप यूज करते हो तो गूगल कोलैब पे इंस्टॉल करने का, पैकेजेस इंस्टॉल करने का सिस्टम डिफरेंट है, एंड जुपिटर नोटबुक के लिए आपको लोकल्स में सब चाहिए होता है. So this is a short tutorial. This actually, as you can see in the step 4, please scroll down. Yeah, the step 4 states that this is a minor project of printing image specifications. It prints the image size. So why not run it directly? Why I'm running this step 4? It is because when you pick up a code, it will be in this format only. This is the small code you'll get on the websites if you search for this project. So run it. Run the copy you made. So we have the error in the very first line. So let's know then how to read and how to understand errors. Guys, look at it. I hope the screen is visible well. So read this red line. It states module not found error. That clearly means that some of the modules you're importing is not found in your locals or in your collab, wherever you're working. And which module is not found? PyTesseract. So, of course, how to go on Stack Overflow? There'll definitely be a link under the code when you use Google Colab. It's quite user friendly. Click on search Stack Overflow. So the very first link you will be getting will be a Stack Overflow link only. Open the link. Not to wonder कि इतना simple काम मैं क्यों करवा रही हूँ. Stack Overflow पे भी it depends कि आप कौन सा solution use कर रहे हो. And that's what we are here to guide for. Stack Overflow has many solutions. You post them, others post them. They are like you only. Some may be working, some not. So whenever we use a good solution, we generally upvote it. And the upvoted and the maximally verified solution, the well-verified solution is the one having a green tick. So you all are supposed to please look for the green tick and then read it. The solution with the green tick will be a verified one. Of course, here it says you need to pip install PyTesseract. I hope it's quite visible. In whatever shell you are using, you need to just pip install PyTesseract. Going back to our collaboratory. So what the difference is between installing it in locals and on Google Colab, you just need to, please move on to step 1. You need to add an exclamatory mark and run the first cell. Successfully installed. Going back to step 4, I'll be running the code again. There's an error in the third line. Again, it is a module not found error, no module named PyTTSX3. So please go on to Stack Overflow again and read it. Now, where's the green tick? Although it's just upvoted by 2 people, it's yet a green tick solution and not a 5 people upvoted one, because that is verified and that is working. How many people used? It's working for most of them. So it says either you need to make a virtual environment, but of course in Colab we don't make it. So either you need to make a virtual environment or you need to pip install PyTSX3 as we did the previous one. Moving back to Colab page, move to step 2. Clearly defining. We've earlier executed step 1. We need to execute step 2. Installing the dependency.
and it's done. Making you do this again and again just specifies that you need to use Stack Overflow every time. Here we the third error again. I have not imported Google Translator for the completion of this project, a must required dependency. So I have already included the cell for it. Go to the third cell. It says pip install Google Trans, and yes, it's not as easy as the previous ones. Iski 3 lines thi. Why is this? This is because you sometimes get version errors. Like pip का भी एक version होता है, same way हर एक चीज का एक version होता है जो lately update होता रहता है. So whenever there's a version error, it again won't execute. So you need to take care of the version too. And यहाँ पे एरर भी मेंशन्ड है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ग्रुप एरर. ये एरर आपको आएगा अगर आप सिर्फ पहली लाइन चलाओगे, बाकी दो नहीं. तो प्लीज रन दिस है. Any doubt still here? That is successfully downloaded. I mean, it will download. So by the time being, any doubts, they're readily welcomed. You can raise your hand, you can speak, you can write in the chat. So moving back to cell 4, although everything is imported, we need a image uploaded in the Google Colab for this project. So here it says img is equal to image.open. Just go on the fourth icon in the extreme left. It says upload file. Upload a file. So pick any image from your PC and upload it. Now hover on that image, and those three buttons, those three dots will give you an option, copy path. Copy the path from here. Copy the path from here. You need to hover on the image name, go on the three dots and copy the path. And paste the path in the second last line. Image is equal to image.open. Here, you need to paste the path. Now, please run the cell. So it's giving me my required output. It's telling me that my file is a PNG image and its mode is RGBA. That means it has all the colors and its size and the address at which it is stored is given. So I hope most of you understood the notebook. Your doubts are readily welcomed. We need interaction, guys. Please let us know if you understood. Yes. Cool. सो यार जैसे गुरबानी ने अभी बताया कि हम कैसे एरर रिजॉल्व कर रहे होते हैं, ये एक एग्जांपल थी. इसका मोटिव क्या था कि आपको खुद एरर अगर आया तो उसे रिजॉल्व करना आना चाहिए. और बहुत बार होगा कि हर बार स्टैक ओवरफ्लो पे नीचे क्लिक करके नहीं हो रहा होगा, तो आपको वो जो एरर लास्ट लाइन में दिया होता है उस लाइन को उस एरर को कॉपी पेस्ट करके क्रोम पे डालना होता है. या आजकल मैं जो बहुत यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी पे डाल सकते हो. या कुछ कोड ही नहीं समझ आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी जो आपको ठीक प्लेटफॉर्म लगता है. मेन मोटिव क्या है कि आपको सर्च करना आना चाहिए. एक बार एरर आ गया तो वहाँ रुक नहीं जाना, कहीं ना कहीं सर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ. खुद जितना देखोगे एरर रिजॉल्व करोगे उतना सीखोगे. नाउ कमिंग टू द DSA पार्ट. सो वाई DSA इज इम्पोर्टेंट. बट DSA अगर आप किसी भी कंपनी के टेक रोल के लिए अप्लाई करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, मशीन लर्निंग के लिए, तो जो आपका फर्स्ट राउंड हो रहा होता है ना, वो कोडिंग राउंड हो रहा होता है. एंड उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का टेस्ट हो रहा होता है आपका. तो डेटा स्ट्रक्चर्स सीखने हैं. तो यार जो सीखते सीखते एरर आ रहे थे मुझे,
उसकी वजह से जो मेरी पेस थी ना वो बहुत स्लो हो रही थी कि यार ठीक है मैंने एक जगह से सीखा कि ये टॉपिक है इसको ऐसे करना है, बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके जब मैं कोड कर रहा था मुझे एरर आ गया और वो जहाँ से सीखा था वहाँ बताया नहीं, वहाँ ऑनलाइन भी मिल नहीं रहा है कैसे ठीक करना है। तो जो मेन एक इसमें मेथड होता है वो होता है डीबगर। डीबगिंग कर रहे होते हैं, अब डीबगिंग जो डीबगर से कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप ना कोड की हर लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, एक लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उस स्टेप पे वेरिएबल्स कैसे चेंज हुए हैं, उस स्टेप पे हमारा जो लॉजिक बनना चाहिए था वो लॉजिक बना है कि हमें ये आउटपुट चाहिए थी बट ये आउटपुट नहीं आ रही है। एरर्स भी काफ़ी टाइप के होंगे, वो गुरबानी बताएगी अभी, बट डीबगिंग करने के मेन दो मेथड्स होते हैं। एक तो जो मैंने बताया डीबगर, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे और क्लोजली एनालाइज कर रहे होंगे कि कोड में चल क्या रहा है। एंड द सेकंड मेथड इज कि आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे और देख लोगे कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है। डीबगर जो स्टार्टिंग में कोडिंग कर रहे होते हैं उन्हें डीबगर से पहले कोड को डीबग करना सीखना होता है ताकि वो खुद इतना अच्छे से कोड एनालाइज करने सीख जाए कि प्रिंट स्टेटमेंट से उनका काम चल जाए। तो एक बार सारे गिटहब ऐप को ओपन कर लो। अब हम डीबगिंग कर रहे होंगे यार, तो एक बार सारे ध्यान दे लो इधर। डीबगिंग कर रहे हैं हम, सबसे पहली चीज रीडमी फाइल में ना ऑनलाइन जीडीपी का लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर। सेकंड लिंक जो रीडमी फाइल में दिया हुआ है, रीडमी 8 पॉइंट के नीचे दी हुई है, रीडमी फाइल में ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर का लिंक है, इसको ओपन कर लो। कंट्रोल प्लस क्लिक से ओपन करना है, न्यू टैब में ओपन होगा। कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, न्यू टैब में ओपन हुआ है ऑनलाइन जीडीपी कंपाइलर। एंड देन हमने इसमें सम debug डॉट सीपीपी डालनी है जो हमारे थर्ड नंबर पे है। कॉपी की, सारा सिलेक्ट किया एंड पेस्ट। यार डीबगिंग और पूरा डीएसए वाला पार्ट ना ज़्यादा सी प्लस प्लस में चल रहा होगा, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं या सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर रहे होते हैं। बट डीबगिंग के लिए डीबगिंग के लिए सेम कोड ना पाइथन में दिया होगा, और अभी सिर्फ सी प्लस प्लस की डीबगिंग सिखाऊंगा बट पाइथन की सेम होगी, तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोड सबका कॉपी पेस्ट हो गया रीडमी फाइल में से। सेकंड जो लिंक था ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर ओपन करना था, एंड थर्ड सम debug डॉट सीपीपी का कोड कॉपी करना था। अगर किसी को कोई डाउट है तो यार चैट में मेंशन कर दो। ठीक है, सो अब डीबगिंग का पहला स्टेप क्या होता है मैंने बता दिया। डीबगिंग स्टेप बाय स्टेप हम कोड को एनालाइज कर रहे होते हैं। डीबगिंग का पहला स्टेप होता है ब्रेक पॉइंट लगाना। ब्रेक पॉइंट कैसे लगता है, जिस लाइन पे लगाना है ना उसके आगे क्लिक कर दो बस एक, ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक पॉइंट वहां पे लगाते हैं जिस स्टेप से हमें कोड को क्लोजली एनालाइज करना है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं, मुझे फर्स्ट लाइन से अपने मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से कोड को एनालाइज करना है, तो ठीक है, ऊपर डीबग साफ साफ लिखा हुआ है, डीबग क्लियर किया, डीबग क्लिक किया, डीबग सेकंड बटन से क्लिक करके यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे स्टार्ट किया, डीबगिंग स्टार्ट हो गया। अब ध्यान से देखो यार, राइट साइड पर लोकल वेरिएबल्स नाम पे हमारे 6 वेरिएबल्स हैं, और देखो हमारे कोड में भी इसमें ABCD 4 वेरिएबल्स है, इस ग्रेटर नाम का वेरिएबल ये, एंड सम वेरिएबल ये, 6 के 6 इधर मेंशन है। अब डीबगिंग में क्या हो रहा था, जिस लाइन ऑफ कोड पे हम होते हैं ना वो लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई होती है, उससे पहले वाला सारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका होता है। अब यहाँ पे मैंने A5 डिक्लेयर किया बट इनिशियलाइज किया, बट यहाँ पे E की वैल्यू 0 है। क्या हो रहा होता है यार कि गार्बेज वैल्यू बड़ी होती है। अगर ये तुम डीबगिंग VS कोड में कर रहे होते हो उसमें काफ़ी बड़ी वैल्यूज पड़ी होती हैं क्योंकि गार्बेज वैल्यूज होती हैं, तो ऑनलाइन में गार्बेज वैल्यू है जो 0 डली है।
अब स्टेप ओवर होता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, इस लाइन को एग्जीक्यूट कर दो, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। देखो नीचे वो बता रहा है कि अभी बी लाइन पे है और इससे पहले ए वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। इंट बी इक्वल टू 10 पे है, इंट ए इक्वल टू 5 वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यार यहाँ देखो ए की वैल्यू 5 अपडेट हो चुकी है। स्टेप ओवर करके नेक्स्ट होगा, बी की वैल्यू 10 आ गई है। स्टेप ओवर सी एंड डी, डी के बाद सीधा ये इस लाइन पे जंप करता है क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल लाइन पे जा रहा होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये 17th लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। मैंने रन की, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इसमें डीबगिंग में क्या हो रहा है, हम अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कौन से स्टेप पे वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है। अब जब हम कोड कर रहे होते हैं, लॉजिक बिल्डअप करके कोड क्या होता है और हमारी रॉन्ग आउटपुट आ जाए, तो हम उस केस में डिबग कर रहे होते हैं कि यार मुझे इस पॉइंट पे ना ये आउटपुट ए की वैल्यू ये चाहिए थी बट ये आ नहीं रही है डिबगिंग के दौरान। तो वहाँ पे हम देख रहे होते हैं बेसिकली रॉन्ग आउटपुट जब आ रही होती है तो हम डिबग करके देखेंगे अपना हमेशा कोड। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप। अब यार देखो इज ग्रेटर में ना अभी रैंडमली वैल्यू फॉल्स चली हुई थी, बट यहाँ देखो हम पहले ही बता देंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इज ए ग्रेटर देन डी, ए की वैल्यू 6 है एंड डी की वैल्यू 7 है। नो, ए इज नॉट ग्रेटर देन डी, तो बूल इज ग्रेटर की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी। स्टेप ओवर करूंगा, इसकी वो वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, फॉल्स ही रहेगी। एक सेकेंड यार, कनेक्शन हो गया था। तो मैं डिबगिंग देखो, अब पहले तक का मैं कोड कहाँ तक डिबग कर चुका था, मैं 19th लाइन तक कर चुका था ना। अब मैं चाहता हूँ 19th लाइन के आगे तक का कोड डिबग हो, तो मैं सीधा 20th लाइन पे अपना ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। मैंने डिबग करना स्टार्ट किया, डिबग पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट किया। देखो इससे पहले तक का जो कोड था वो सारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ए की वैल्यू हमारी इस वक्त 6 थी, बी की 30 थी, सी की 3 थी एंड डी की 7 थी। अब डी की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, मैं लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले बता सकता हूँ। ए प्लस सी, ए 6, सी इज 3, 9 होगी। स्टेप ओवर किया, डी इज 9। ध्यान से देखो लोकल वेरिएबल्स में अब आई इनिशियल आई वेरिएबल भी आ गया। आई अब क्यों आया है, क्योंकि फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर्ड था। ये सिर्फ जितनी देर फॉर लूप चल रहा होगा उतनी देर होगा। अभी भी आई में रैंडम वैल्यू पड़ी है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो आई इक्वल टू 0 अभी हमारे कोड के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ। अगर यहीं पे 1 लिखा होता तो जब मैं स्टेप ओवर करूंगा यहाँ पे वैल्यू 1 अपडेट होगी। नेक्स्ट किया, देखना अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी। ये इसलिए फॉर लूप डाला है क्योंकि जो हमारा मेन फॉर लूप में दिक्कत आ रही होती है, मतलब कोड हो रहा होता है वो किसी ना किसी लूप में चल रहा होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस स्टेप को क्लोजली कैसे एनालाइज करना है, ये ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, बी की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, सी की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है एंड डी में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये फॉर लूप 3 बार चलना था, एक बार चल गया। अब देखना आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 2 बार फॉर लूप और चलेगा, एक बार हो गया, लास्ट टाइम चल रहा है। उसने जब आई की वैल्यू 3 हुई थी ना, लास्ट में जाके इस कंडीशन पे जाके चेक किया एंड 3 वाज नॉट स्मॉलर देन 3, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, वो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल लाइन पे यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, फंक्शन कॉल हो रही है, कैलकुलेट सम हमारा फंक्शन है, कैलकुलेट सम हमारा फंक्शन है। जब मैं अब स्टेप ओवर पे क्लिक करूंगा ना, स्टेप ओवर से वो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल लाइन पे जाएगा, फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। फंक्शन के अंदर जाने के लिए मैं स्टेप इनटू पे क्लिक करना है, स्टेप ओवर पे नहीं, स्टेप इनटू पे क्लिक करना है फंक्शन के अंदर जाने के लिए। अभी तक का यार किसी को कुछ डाउट हो? अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो यार चैट में मेंशन कर दो या हैंड रेज कर दो, अनम्यूट भी कर सकते हो। सो अभी हम फंक्शन में आ गए हैं। अब देखो कॉल स्टैक अपडेट हुआ है, मेन के बाद कैलकुलेट सम
फंक्शन कॉल हुई है एंड इसके जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ सम है। तो अगर मुझे अभी मेन फंक्शन की वैल्यूज देखनी है वो क्या थी, मैं यहाँ पे मेन पे क्लिक कर दूंगा, उसके लोकल वेरिएबल्स आ जाएंगे। बट जैसे चल रहा है वैसे चलते रहते हैं, कैलकुलेट सम पे हैं तो ठीक है, उसका सम अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो यार हमारा फंक्शन तक का डिबग हो चुका था, मैं फिर से डिबगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। वही फंक्शन के अंदर जाने के लिए स्टेप इनटू पे क्लिक करना है, फंक्शन के अंदर गए, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई एंड सम इक्वल टू 0 वाली, और कॉल स्टैक हमारा अपडेट हो चुका है। इसमें एक बार फंक्शन में आ गए तो नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो सम 0 हो गया और फॉर लूप का आई अब यहाँ पे आया। आई की वैल्यू ए है और हमने ए क्या भेजा था, हमारा फर्स्ट पैरामीटर 1 था और जो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर ए है वो 1 है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, आई की वैल्यू अपडेट होकर 1 हो जाएगी। देखो अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा ए से लेके बी तक का सम निकाल रहा होगा, जो कि 1 से लेके 4 तक का सम कर रहा होगा, जो 10 आएगा। तो हम इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। बी की वैल्यू 2 हुई, सम में 2 ऐड हुआ 3, बी की वैल्यू 4 हो गई है, 4 सम में ऐड हुआ 10। इस पॉइंट पे आके आई इंक्रीमेंट होगा और बट वो बी से छोटा नहीं होगा, 5 वैल्यू हो जाएगी। तो ये लाइन रन नहीं हो रही होगी, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब ये फंक्शन से बैक ट्रैक करके अपने मेन फंक्शन में आएगा। देखो वो फंक्शन का कॉल स्टैक अपडेट हो गया एंड सम वेरिएबल भी हमारा अपडेट हो गया। अब यार हम कैसे बताएंगे ये इफ स्टेटमेंट रन होगी कि नहीं, हमारी सी आउट स्टेटमेंट आउटपुट में आएगी कि नहीं। इज सम ग्रेटर देन 100, नो सम इज स्मॉलर देन 100। तो पहली कंडीशन ही स्टेटमेंट की फॉल्स हो गया तो सी आउट स्टेटमेंट नहीं आएगी, ये सीधा रिटर्न 0 पे जा रहा होगा। सो दिस इज डिबगिंग फॉर C++। सेम हमारी उसमें चल रही होती है पाइथन में। तो सबका होमवर्क ये है कि आप पाइथन में जाके कर लेना। किसी का कुछ डाउट हो? हाँ, ये स्टेप ओवर होता है कि नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं हम। स्टेप इनटू होता है कि फंक्शन कॉल है इस लाइन पे, तो हम उस फंक्शन के अंदर जाने के लिए उस फंक्शन की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट अगर हमें करना होता है तो उसके लिए हम स्टेप इनटू यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टू गुरबानी। So since we have already moved on to DSA errors and how to handle them, what Gaurav taught right here was how to handle logic errors. Now, since there are many different types of errors, so I'll be first making you know all these errors, and then we'll be slowly going on to the hands-on practice on how to handle these errors. So as you can see, 5 types of errors are shown on the screen. The first being the syntax error. We all know there are some rules and regulations to a language. And if you break them, of course, if you don't write the code according to the language you're writing it in, आप सी आउट सी इन को mess up कर रहे हो, आप include iostream की जगह कुछ और लिख रहे हो, those are the basic rules everybody is familiar with. Writing them wrong is a syntax error. Second comes runtime error. Runtime error is that when you have made a good logic, but हाँ कहीं ना कहीं जाके वो logic fail हो रहा है. For example, C++ में negative indexing is not allowed. Now what is negative indexing? Suppose आपने loop लगाया है from 0 to this size of array, but आपने कहीं loop के अंदर
एक स्टेटमेंट लिखती है I minus 1. So it will run from 1 to end of the array. But for 0, 0 minus 1 is minus 1. And negative indexing is not possible. So while running the code, whenever the code will encounter this negative indexing, or sometimes the upper bound, out of bounds indexing, then it will throw you a runtime error, and you need to tackle it. There comes linker error. Now, linker error comes when your executable is not being formed or your program is not getting compiled because of some missing link before making the exe file. So that's generally not handled here. The fourth is the logical error, and I hope you're good to go with how to handle logic errors, debugging. And then comes semantic error. Semantic errors are most probably same as logic errors according to some of the writers. But a few examples of it will be आपने int में 12.3 डाल दिया. A big blunder, right? But it comes under the semantic error and you need to correct it. So slowly now we'll be getting a hands-on practice on these errors. So shifting to Gaurav. तो यार अब एरर्स बता दें किस टाइप्स के होते हैं, बट एरर्स देखने से पहले कि कैसे आएंगे. हमारा कुछ एरर्स तो आएंगे नहीं अगर हमें पता हो कि हमें कोड में हमारे लॉजिक क्या यूज़ करना है और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है. इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस हिसाब से हम अपना डेटा स्ट्रक्चर और हमारा लॉजिक सोच रहे होंगे. तो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि यार इतने टाइम में हमारा कोड एग्जीक्यूट और रन हो जाना चाहिए. तो अब इसका क्या मतलब है कि जनरली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे GFG, लीड कोड, कोड शेफ, इन सब की टाइम लिमिट 1 सेकेंड होती है. अब यार हमने कोड किया है, अब हमें कैसे पता होगा कि वो 1 सेकेंड में रन होगा कि नहीं होगा. तो इसके लिए 1 सेकेंड में ना 10 पावर 8 ऑपरेशन हो रहे होते हैं. ये चीज़ जब मैंने स्टार्ट की थी DSA मुझे भी नहीं पता था. 1 सेकेंड में 10 पावर 8 ऑपरेशन हो रहे होते हैं. 10 पावर 8 ऑपरेशन की एग्जांपल कि एक फॉर लूप चला दिया मैंने 1 से 10 पावर 8 तक. उसमें 10 पावर 8 ऑपरेशन हो रहे हैं बिकॉज हर एक लूप के बाद एक आइटरेशन के बाद i++ हो रहा है. तो 10 पावर 8 टाइम्स i++ हो रहा होगा, तो 10 पावर 8 ऑपरेशन हो रहे हैं. तो ये 1 सेकेंड में ये कोड रन हो जाएगा. जनरली 2 × 10 पावर 8 तक का भी कोड 1 सेकेंड में रन हो सकता है. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रखनी है कि तुम्हारे 10 पावर 8 के आसपास के ऑपरेशन हो रहे हो वो 1 सेकेंड में हो जाएंगे. लीड कोड किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की देख रहे हो तो उसकी 1 सेकेंड होती है जनरली. ठीक है. अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ GFG की. स्क्रीन यहाँ मैंने रीडमी में से ना जो ये GFG प्रॉब्लम लिंक है ये ओपन की. कंट्रोल राइट क्लिक से करना, लेफ्ट क्लिक से, ताकि न्यू टैब में ओपन हो. ठीक है. अब यार देखो GFG क्या कह रहा है कि हमारा ना 2 एरे हैं, उन दोनों का एरे साइज n है एंड हमें चेक करना है कि दोनों एरे इक्वल है कि नहीं. अब GFG ने तो सीधा बताई हुई है कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होनी चाहिए. बट यही अगर मुझे खुद पता करनी होती कि O ऑफ n में होगी कि नहीं. n पे कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है 10 पावर 7 का. जनरली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n या किसी ना किसी नंबर के ऊपर हो रही होती है. तो n 10 पावर 7 तक है. अब मैं n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इस पे लगा सकता. n² कैसे होता है, जैसे मैंने 2 फॉर लूप लगा दिए हैं n पे, नेस्टेड 2 फॉर लूप्स लगाए हैं. एक फॉर लूप 1 से n तक, उसके अंदर एक और फॉर लूप 1 से n तक. तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² होगी. n² मतलब 10 पावर 14 ऑपरेशंस. तो यार नहीं, n² नहीं लग सकती है. तो n² से जो बेटर अप्रोच होती है वो होती है n log n. तो मैं कहूँगा यार n log n नहीं, n log n की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 पावर 8 से ज़्यादा जाती है. उससे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या है हमारी, O ऑफ n की. GFG ने डायरेक्टली दिया हुआ है कि यार तुम्हारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होनी चाहिए. इससे ज़्यादा में कोड करोगे तो TLE दे देगा. व्हाट इज TLE? टाइम लिमिट एक्सीडेड.
एंड इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है कि आप एरे की साइज जितनी एक और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हो, विच डायरेक्टली मीन्स कि आप एक और एरे डिक्लेयर कर सकते हो साइज एन का। बट अगर आप एन स्क्वायर तक की स्पेस भी कई बार ले लेते हो, स्पेस ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो उसमें कुछ एरर नहीं दे रहे होते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेसिफिक बहुत रहते हैं, 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। अब ये एग्जांपल थी जीएफजी की, बहुत बिगनर फ्रेंडली है अगर किसी को कोडिंग करनी स्टार्ट करनी है, या जो कर रहे होंगे कॉन्टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे दे रहे होंगे। बट अनदर एग्जांपल लीड कोड की, रीडमी में से मैं 4.2 लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एंड लीड कोड की प्रॉब्लम पे आया हम। अब लीड कोड की प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, बट एक ना एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, और हमारे नम्स पे एक कंडीशन डली हुई है नम्स डॉट में कि एरे का साइज ना 3000 तक हो सकता है। अब कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो ऐसे केसेस में हमें खुद सोचना होता है कि हमारी अप्रोच क्या लगेगी, हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या लगेंगे। जैसे जनरली एनालॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना हम ये सोच रहे होते हैं कि सॉर्टिंग हो रही होगी, क्योंकि सॉर्टिंग की जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एनालॉग एन होती है, या एक हीप्स या प्रायोरिटी की डेटा स्ट्रक्चर होता है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालॉग एन होती है। तो हम कहीं ना कहीं हमारा सोल्यूशन इसी ओरिएंटेड होगा कि हम ऐसे नहीं होगा कि हम 2 फॉर लूप्स लगा रहे हैं और कोई डेटा स्ट्रक्चर लगा रहे हैं फालतू में, अगर और कुछ बन रहा है तो ठीक है। बट हाँ, ऐसे ही हम कोई ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला अप्रोच नहीं सोच रहे होंगे जिसकी वजह से हमारे एरर्स नहीं आएंगे। तो अब इस केस में हमारी जो एरे का साइज है वो 3 × 10⁻³ दिया होगा। अब एन स्क्वायर लगा के देखो कितना बनता है, एन स्क्वायर बनता है 9 × 10⁻6, which is almost 10⁻7. 9 को राउंड ऑफ किया 10, 10 × 10⁻6 is 10⁻7। यार ठीक है, एन स्क्वायर तक ठीक चल रहा है, बट एन क्यूब तक नहीं ठीक चलेगा, क्योंकि वो एन क्यूब क्या बन जाएगा 27 × 10⁻9। अब 27 × 10⁻9 मतलब 2.7 × 10⁻10। तो यार 10⁻10 ऑपरेशन हो रहे होंगे एन क्यूब पे, और ऐसे एन स्क्वायर लॉग एन पे भी 10⁻8 से ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे होंगे। तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रिपल सम प्रॉब्लम है, जितना मुझे याद है ये शायद एन क्यूब से भी सॉल्व हो सकती है, बट 2 पॉइंटर टेक्निक लगा के ये एन स्क्वायर पे सॉल्व होगी। तो खुद मैंने 3 फॉर लूप नहीं लगाए, मैंने अप्रोच को ऑप्टिमाइज किया है। जब डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे होगे यही चीज़ होती है मेन, कि आप अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे बेस्ट सोल्यूशन लेके आ सकते हो। तो ये एग्जांपल थी जीएफजी और लीड कोड की। थर्ड बीइंग कोड शेफ, उसके नीचे डायरेक्टली लिखा होता है 1 सेकेंड। हाँ, उसमें कंस्ट्रेंट भी मेंशन होते हैं कि नाम जो अपना एरे का साइज है वो उसकी मैक्सिमम लिमिट 3000 है। उस पर कॉन्टेस्ट दो के हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रहा होता है, और नीचे हर क्वेश्चन की टाइम लिमिट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की 1 सेकेंड होती है। नाउ हाँ, अब इस पॉइंट को थोड़ा और सही बताने के लिए कि हाँ यार मैं सही बोल रहा था, ये टेबल है 10k is 10⁻4, it is the length of input, and 10k is 10⁻4। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बताई हुई है एन स्क्वायर, 10⁻4 का स्क्वायर करोगे 10⁻8, 10⁻8 ऑपरेशन बन सकते हैं इसमें। 1 मिलियन इज 10⁻6, 10⁻6 की एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है, एन स्क्वायर नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली 10⁻12 ऑपरेशन आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। 10⁻8 अगर हमारी इनपुट है, लास्ट रो, तो 10⁻8 जो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन ही लग सकती है, या उसके कम की लग सकती है। ठीक है, अगर ये तुम्हारी इनपुट 10⁻9 की होती है, उससे कैसे डील करना। 10⁻9 की है तो ओ ऑफ एन भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी, उससे कम की लगानी पड़ेगी, विच इज जनरली लॉग एन या ओ ऑफ 1। अप्रोच ऐसे सोचनी है। ठीक है, मान लो एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन होता है, वो लॉग एन में हो रहा होता है, हम उसको ओ ऑफ एन में नहीं करेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम में। तो इस तरह से हमें अपना कोड सोचना होता है। किसी को इस चीज में डाउट? पर्सनल चैट में भी ले सकते हो अगर किसी को कुछ डाउट हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। यार
हमारे वेरिएबल की रेंजेस। अब क्या है, जो मेरी इंटीजर वेरिएबल C++ के लिए है, पाइथन में कोई रेंज नहीं होती, एक ही वेरिएबल होता है, तो उसमें जितना मर्जी बड़ा नंबर स्टोर करा लो। ये C++ फिर से वही है कि ज़्यादातर बच्चे C++ में कर रहे होते हैं। इंटीजर की रेंज इन्होंने बताई हुई है कि यार ऑलमोस्ट -2 × 10⁹ से लेके +2 × 10⁹ तक जा रही होती है। अब अगर मुझे इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो मुझे अपनी डेटा टाइप चेंज करनी है। हर वेरिएबल की दी हुई है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोड पे लेके जाऊंगा। सारे गिटहब रेपो खोल लो एक बार। एक डाउट आया, व्हाट इज O ऑफ n? O ऑफ n यार यही है कि तुम्हारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो O में डिफाइन की जाती है। O ऑफ n में जो ब्रैकेट के अंदर होती है वो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम O ऑफ अंदर जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। आई होप डाउट इज क्लियर। ठीक है, और किसी का डाउट है तो सिंपल डायरेक्ट मैसेज भेज सकता हूँ जूम के अंदर। सो सारे एक बार गेटअप खोल लो एंड वी विल बी गोइंग टू टाइप कास्टिंग वाला फिफ्थ कोड खोल लो, टाइप कास्टिंग .cpp। कॉपी करो और ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर में करना है। ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर का लिंक रीडमी फाइल में दिया हुआ है, रीडमी 8 पॉइंट के नीचे है। सेकेंड लिंक है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर का। फिफ्थ कोड कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने कॉपी कर लिया फिफ्थ कोड, मैं यहाँ पे डालता हूँ। अब यार देखो इसको ध्यान से। मैंने x इंटीजर x में ना, x जो वेरिएबल है उसमें इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू सेम है, ठीक है। मैंने मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। अब मैंने कहा यार मैं एक इंटीजर सम वेरिएबल में x+1 स्टोर करना चाहता हूँ। आउटपुट देखते हैं एक बार क्या आ रही है। आउटपुट माइनस में ये नंबर आया। अब ये माइनस में नंबर क्यों आया? इंटीजर जब अपनी मैक्सिमम रेंज पे पहुंच जाता है, अगर उसके आगे उसको लेके जाओगे +1 करोगे ना, तो वो स्टार्टिंग से अपनी लोअर लिमिट से स्टार्ट कर देता है। फिर से अगर मैं 2 ऐड करता तो यही यहाँ पे एंड पे 7 आता। तो इस चीज को कैसे डील करें? ऑब्वियसली फिर जिस वेरिएबल में मैं स्टोर करवा रहा हूँ उसकी डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ ताकि वो बड़े नंबर स्टोर कर सके। मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग में कर दिया है, तो ये ना नंबर इंटीजर से ज्यादा रेंज होती है इसकी। तो इसको मैं जब रन कर रहा हूँ अभी भी आंसर गलत आ रहा है। अब यहाँ पे देखो यार आंसर तो गलत आ रहा है। एक्स हम मेरा इंट में है एंड 1 भी मेरा इंटीजर है, एक्स भी मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो मेरा कंपाइलर कह रहा है कि यार जो ऑपरेशन हो रहे हैं ना वो इंटीजर वैल्यू में हो रहे हैं, तो जो मैं आउटपुट भी दूंगा वो इंटीजर वैल्यू में दूंगा। इस चीज से कैसे डील करना है? हम ना टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है? बहुत सिंपल है। तुम कहोगे ठीक है यार एक्स टू एक इंटीजर टाइप है, बट मैं ना सिर्फ तेरी इस स्टेप के लिए ना डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, तुझे लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब कंपाइलर कहेगा एक लॉन्ग लॉन्ग में है और एक इंटीजर वैल्यू है, तो लॉन्ग लॉन्ग की ज्यादा रेंज होती है, तो मैं लॉन्ग लॉन्ग में अपना आंसर रिटर्न करूंगा। सम वेरिएबल ऑलरेडी लॉन्ग लॉन्ग डेटा टाइप का है एंड मैंने सिर्फ एक्स को इस स्टेप के लिए लॉन्ग लॉन्ग में इंटीजर में कन्वर्ट किया है। अब मैं रन करूंगा, देखो मेरा पॉजिटिव में सही आंसर आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो यार चैट में लिख दो। देन कमिंग टू सेकेंड एग्जांपल, यार मेरा इंटीजर ए है और बी है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो 15/2 की वैल्यू 7.5 आनी चाहिए थी और फ्लोट हमारा डेसिमल नंबर को स्टोर करवा रहा होता है। तो जब मैं रन करूँगा सेम वही दिक्कत आएगी कि वैल्यू 7 आ रही है। वो कह रहा है मेरा ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो जो मैं आउटपुट दे रहा हूँ वो मैं इंटीजर में दूंगा। तो ना
किसी भी एक वेरिएबल की डेटा टाइप में फ्लोट। अब वो कहेगा यार फ्लोट डेसिमल स्टोर करवा लेता और मेरी आउटपुट भी डेसिमल में आ रही है, तो ठीक है मैं डेसिमल रिटर्न कर रहा हूँ। आंसर 7.5 आ गया। सो दिस इज टाइप कास्टिंग। अगर किसी को एरर है, किसी को कुछ दिक्कत है तो बता सकता है। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो कमिंग टू करवानी। So since we are done with how to debug and how to understand what algorithm or what approach is to be applied for a question, let's move on to practice for clearing the errors. So please move on to your Git repository. Go to 7.1. It states common DSA errors. Please open it. Now there's a copy option right here. Please copy the code. Open an online compiler, online C++ compiler. This is also in C++. So and paste the code here. Now we will be uncommenting each line one by one and understanding how to see and understand and finally resolve these doubts and errors. So first of all, go on the 11th line. It's already uncommented. So please run the code. It simply states there's an error, but reading an error is not as difficult in these compilers as you think, because although there are many compilers and the platforms we earlier shared, like Gaurav shared how to work on GFG, LeetCode, CodeChef, none of these provide you this well definition of an error. So we will be starting with the basic. This is a really nice online platform. Errors depend from compiler to compiler. This platform states there is an error. There is an error. And now what you think is difficult to read is not that difficult. Read here. It states the error is in function int main. And the error is initializer string for char 20 is too long. So they just want to say that the string is too long, but which string? Please pay attention that it is written 11:20. This means that the error is in 11th line and 20th character. So in the 11th line here, in the 11th line and 20th character, so we will be moving on the 11th line. The 20th character is where I gave the address to the reference array. This is a reference character array. It has the size of 20 and there is some error in this. And the error's name is too long string. So basically, you go and read the number, count the number of characters in the string. It is 4 plus 1 for space, 2 for is, 1 for space, a, then 1 for space, and then long in string. Of course, this was just to let you know that space is also counted as a character. So in total, this is 21 characters, and the address space I have provided is for 20. So basically, whenever you will run it, it is going out of the bound, hence it's posing you a too long string error. Comment it again. Now uncomment the 13th line. Run it. I hope you got to know that there is an error in the function int main. In 13th line, 28th character, and the error says too many initializers for int 4. It says that you provided an address space
for 4 integer variables, but you have given 6 integer values in the same array. You got the space for 4, but you gave 6. So of course, it's throwing the error. Comment this again. Now, please uncomment the 16th, 17th, and 18th line. Run the code. Control Enter is the shortcut for running the code on most of the online compilers or Colab also. I'll refresh the site because the internet is a bit slow. So here in line 21, I run this code first. So the line 21 states that I am making a new pointer. I'm making a new pointer and then I'm deleting the pointer. We know that whenever we dynamically allocate the space, we have to free the space later. So when I deleted the pointer in line 22nd, the pointer doesn't exist now. Deleting it again in line 23 gives me the error. I have double freed the memory. Double free detected. It says that you have twice tried to free the memory. Hence, the code's compilation is aborted. So we have aborted the code's compilation and hence we encounter this error. Now, I'm really sorry, I missed one code previously. So please uncomment line 16, 17, 18 and run this code now. It just gives me floating point exception. How to understand what floating point exception is? So here, if we give a clear look to the code, A is 10, B is 0. And then we made a div variable int type and we divided A by B. Clearly, we divided 10 by 0 and that gives us runtime error as we discussed previously. So this runtime error will definitely throw us floating point exception. Now, commenting these lines again, I'll move on to our next example. Recursive function. So please uncomment line 28. Recursive function is calling a function. The function is written in 4th, 5th, and 6th line. So I'm really sorry to show you guys that this function is calling itself, but is not having any base condition. This is a big blunder we all do while attempting some codes which require extensive recursion. And then later on, we forget to put a nice base condition, the required base condition, or we miss some base condition, and it leads to infinite calling of the same function. Now, if I try to run this code, it will give me a segmentation fault. What is a segmentation fault? The segmentation fault says that maybe the order of your code is not correct. Of course, it's seeking a termination condition and I'm not providing it. So it thinks, the compiler thinks that there's some termination condition, but it is not in order. The function is not terminated. Any doubts till now? I hope we are good to go. So please uncomment line 31, 32, and 33. Run the code. Not a surprise, it's throwing 2 errors. It says that the error is in function int main, 32nd line, 9th character. Let's move on to 32nd line. In 32nd line, we have initialized int AR 10, but I previously initialized int AR 5. So there is an array named AR and I have given it 5 address spaces. And now I'm reinitializing an array with the same name and I'm giving it 10 spaces. So it conflicts my previous declaration of AR name. Hence the first error. Now the second error is again backtracking to its previous line. It says previous declaration as int AR5.
Now the compiler is saying you, first of all, you have given two arrays with the same name. Now, not only repeating the name, you have conflicted the address declaration too. The first array was of 5 size and the next array is of 10 size, and then you have given it a value 10 and then you have tried to print it also. So it is throwing two errors. And now the last example we have is segmentation fault. So please uncomment line 36 and 37 and run the code. It says segmentation fault again. Why? Because I initialized the pointer, but it was a null pointer. खाली डब्बे में से क्या ही निकाल लोगे, उसमें कुछ नहीं है. It's pointing to a null space. Now it's pointing to a null address. How can you point it out to 10? There's nothing on that address. So it poses you a segmentation fault. And we are done with the examples on our online compiler. Now, how about a bit of hands-on practice on these platforms also? I hope there are no doubts. Please raise your hand in case of any doubts. You can unmute also. Cool. Ma'am, can So, you explain a segmentation fault once again? segmentation faults come whenever you're trying to access something which is not present. Whenever you're trying to access something which is not present, or there is no termination condition while you're calling a function. Of course, your code has to terminate somewhere. TLA and segmentation fault are a bit different. TLA is when you use the wrong approach. Your code is working, but somewhere it's taking longer time than expected. But segmentation fault, as I gave the example, in the recursive function, there was no termination condition. So the function went on being called again and again, and the compiler understood a simple situation that maybe the person has written the termination condition on a wrong place. So it said, maybe the segments you have arranged in the code are not on the right places. So please correct the order. Hence the segmentation fault. Okay, ma'am. Any other doubt? So please move on to the Git repo again and go to the README file. There's a 7th point TLE named. It's a link. Please open the link. Of course, there's no problem description first. We directly jumped on to the solution. I request you all to please copy the solution. I'll get to the problem in a minute. Select Java from here and paste the solution onto the compiler code. So now going to the question description, it says, given an integer array nums, the name of the array is nums, and an integer k, return true if two different indices I and j in an array such that nums of I is equal to nums of j. That clearly means that the array has duplicates at two different indexes, I and j. And if the distance between indexes is below or equal to k, that means is at max k integer. So you need to return true. Seeing the first example, there's a nums array 1, 2, 3, 1. So the 0th and the third index pose the same number 1, and the distance between them is 3 minus 0, 3. And k is also 3. So this will return true. Now running the code, we should not be getting any error because we have applied the right approach. It says nums की length तक पहले हमने पहला for loop चलाया, then दूसरा for loop चलाया, and then we said that whenever there is a similar number on two indexes and the indexes are not same, we need to return true if the absolute difference is less than k, else come out of the for loops and return false. Maybe you couldn't understand the approach well, but let's try and submit it first. Because maybe the approach is not right. Yep, it isn't. It posed you a runtime error. So this is definitely an exercise for you all. I need a bit of interaction.
Please let me know why did it pose a runtime error. I need answers to this. Please tell me why did it pose a runtime error? Can you see any error in the approach? Runtime error is when we are going out of bounds, or when we are not using the correct approach, or running it, it may give one more error. Let's try to run it. No, it's not giving any error while running it. Means it's working for most of the test cases. No answers? No answers for the time limit exceeded error too? Time complexity is too high. O of n square. Yes, the time complexity is O of n square, and the constraints are the length of the nums array is 10 raised to power 5. So can you please tell me why did n square did not work? Because as discussed earlier, in 1 second 10 raised to power 8 operations occur, and 10 raised to power 5 square, that means n square here comes out to be 10 raised to power 10, which is far greater than 10 raised to power 8. Hence, it is a TLE. Let's go back to the GitHub repository. Basically, here we did not have to make two different loops. We required to use the two-pointer technique, and you'll definitely get a solution to it. The next comes in the README, 8th point, integer overflow. Please open it. So this problem states that can we make arithmetic progression from a sequence? It gives us a sequence and it tells us to return true if the sequence is an arithmetic progression. That means the difference between two consecutive numbers in the sequence is same between all the two consecutive numbers. A plus n minus 1d, if you remember. So my approach says, and of course, I took complete care of the time complexity. The array length is below 1000 or equal to 1000, so I can use n square easily. So here I used a for loop and I said that if starting from 0 to end of the array length, I said that if array of I minus array of I minus 1, that is, I am subtracting the two consecutive numbers and I'm saying if it is not equal to d, return false, else return true. You guys understood the approach? I'm just subtracting two consecutive numbers. Let's try to submit this. This posed a runtime error. It says addition of unsigned offset to this address position overflowed to this address. I have moved to a wrong address. Can you please tell me why? This is the last exercise of the day. Please let me know. Ma'am, because when I is equal to 0, array of -1 is not defined. Exactly. Negative indexing is not allowed in C++. Thank you so much. So when array of I is 0, array of I minus 1 is array of I minus 1 not allowed. So this poses a runtime error. I'll show you the correct solution from the submissions. Basically, I'll start the loop not from 0, but 1, and I'll end the loop before the size so that it does not pose negative indexing as well as out of bounds error. This will definitely be accepted, and the code says that we need to start the loop from I is equal to 1 to I is less than n minus 1, and then I need to subtract two consecutive numbers, the same approach. So this is it from my side. Any doubts? If you have any doubts from Gaurav, you can let him know.
So, okay, class. Any question, any queries, please? Okay, no worries. So let's take a 10-minute break. Yes, no class? Yes, sir. And we will resume our session by 4:40, 4:50, sorry. चलिए अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. Okay, so class, screen भी share कर दें. So let's move to the next session, that is so welcome to the next session. So here we have Ish Kagan. He will cover the advanced Kaggle. So he will share his Kaggle journey. He will share different resources, how he achieved this. First, let me ये Kaggle expert है. And आपसे request है kindly post your question query in the chat also, और आप unmute करके भी question पूछ सकते हैं. So Ish Kagan, please go ahead. Thank you, sir, first of all, for inviting me over here. Very good evening, everyone. I'm Ishwan Singh. Many of you have been known to me, or many of you know me by face or by name. Anyways, let's move into the session. Okay, so first of all, I'm going to share about what I have done till now, what I have achieved, and how I have achieved it. Then I'm going to tell you about what all my mentors were, and then moving on to the advanced Kaggle as we need, and then the resources which are going to help you to reach this level and which helped me even, and I have streamlined those resources so that it's easier for you to reach those level easily. Moving on, first of all, I am a BTech student doing my second year in COE from Thapa Institute, and side by side, I'm pursuing my BS from Indian Institute of Technology, Madras. And I'm aiming to become a data analyst or a data scientist. First of all, the aim to become something is really important, whether you are first year student, second year student, or any year student. The aim is a must, whether to whatever you want to achieve. All right, so I'm going to share some of my skills over here. These skills are not the just main crux of it, but these are just a basic part of what I am. First of all, mathematics, linear algebra. This is the basic mathematics that we did in engineering first year. Then stats and probability, which is necessary for doing data analysis and data predictions. Then moving on to calculus, this is even what we did in class in engineering first year. Then the programming languages is as same as everyone has done till now, except for Python based, which you guys have done in like 2 days, and I did it in like 1 or 2 months. Next is a web development. I have done just basic web development, that is HTML, CSS, JavaScript, no hi-fi, React, JS, Node.js, anything of that sort. Apart from this, I use various libraries, frameworks, like some of them I have mentioned over here, like Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Plotly for data visualization, XBoost, Skitlearn, Spacey, Plotly. All of these are some of the libraries which I often use for my data visualization, or basically for ML even. Apart from this, I use my machine learning algorithms. Some of them are regression, classification, clustering, neural networks, deep learning, K-means. Apart from the GAN models, even I have started with them. Then the next thing that we have done, I have done is database management system. MySQL is what I have done online or through by learning it on myself. Oracle was in the course curriculum in second year, so I did from there. We can go on for next more and more of database management system because they do help us out, like MongoDB and all. So sharing you with these are the profiles of my LinkedIn, website, Kaggle, and GitHub. I'm going to show you what all I have done over there. I hope every one of you have made a LinkedIn profile by now. And if you guys haven't done it, do make it because it's necessary. All right. And it's necessary to make your LinkedIn profile, keep it up to date with what you are doing and because your LinkedIn profile is basically a digital representation of what you are. Moving on to next is my personal portfolio. This personal portfolio is necessary because an interviewer needs to represent
you need to represent to yourself as a unique personality over there. Because a 2-sheet or 3-sheet CV resume is required, but that doesn't show your uniqueness out there. The next one is my GitHub profile. This GitHub profile consists of repositories I have put over here. Some of them might contain Kaggle notebooks. And to be frank, I have not maintained my GitHub profile till now, and it's all right. But yeah, you guys should maintain it off and on to just to keep yourself updated on platforms. The next one is just a second, guys. The next one is my Kaggle profile. This Kaggle profile, I'm going to share it with you guys over here. Okay, so this is my Kaggle profile. I'm a 2 times Kaggle expert. One is in data sets and notebooks expert even. So I did my Kaggle. I've been joined Kaggle from past 7 months until now. It has been a great journey to reach this level. And sharing you with you guys what all I have done till now or my achievements. So here are some of the achievements. I recently went to Paradox 23, which was organized by Indian Institute of Technology, Madras. And since it was an annual technical fest over there, I participated in various competitions held over there. And one of them which intrigued me and I won was the Pixel Mind AI. This competition barely included of image enhancement and maintaining the structural similarity of the images by training them using machine learning algorithms and all that, where I competed with various working professionals, 4th-year graduates, and many of the people out there. And I won second prize over there with a cash prize of 50,000. Apart from this, I consider being a Kaggle expert as an achievement. So yeah, being a Kaggle expert 2 times is a hell of achievement for me, because reaching this level took me 7 months of my time with day and night efforts for it. Apart from it, I have participated in various Kaggle competitions. Some of them might not be so glorious as the one that I have shared in the first one. Yeah, they might not be the rank holders even, but yes, participating in a call across the globe and moving yourself or putting yourself in the top 10% is a great tremendous job. So yeah, I'm proud of that even. Next is about me, where I did all the courses from and what all my resources were. So first of all, for Python, I did my Python from Code with Harry. Code with Harry is basically a YouTube channel which all of you might have been familiar with for doing C and C++ even. Apart from it, I did my certification from Kaggle and I learned some of the resources from there even, which helped me. In IITM, I was having Python as a main subject because it's necessary to clear the Python basics language over there. So yes, IITM resources did help me to upskill my Python skills over there. Coding is not what you can gain in one day or by just waking up one day and learning the things or by seeing them. You need to practice them day and on. So in order to get a consistency over there, and that I did by hacker and problems. I'm a 5-star gold, 5-star Python problem solver over there. I have done various problems and I wish that you guys even go over there and do those problems, because that's going to help you get the consistency that is required in your life, because building the basics is key to moving ahead with the advanced level. If your basics aren't clear, then you can't go ahead with the codes which are going to be tough. The main thing is that what you think and what you type are should always going to be the same. Meaning if you're thinking of a variable A, that variable should be typed over there in the same way itself, with no other changes over there. Next is I've shared some of the Python tools with you guys. These Python tools you might have been familiar with, or you might not be, or later on in your life, you might use them even. Some of them are pandas, NumPy, which you have guys used, matplotlib even, then Seaborn for data visualization, skitlearn, Keras for data learning models and all. So all of this is just for reference. Then for data visualization, I personally didn't learn any course for data visualization. I just did it on my own by practicing and by seeing what I can get from Kaggle. That is, there were various types of visualizations. Let me share it with you guys over here. This is one of the visualizations which I got over there. Then there were many sample notebooks which I have tagged over here, which I refer to as really good, which helped me out to gain this data visualization or EDA of a data set, sharing with you guys over here. Just a second. All right, so it's loaded, I guess.
Yeah. So these are some of the data EDA this notebook has done. Like all of it is dependent, like how you do put the title over there in the plots or count plot, or how you combine the two plots over here. All of it is available on Kaggle, and I'll say go on with the documentation of each library, because the main thing or main coder is the one who can go and visualize all the documentations in all the libraries and read from there and get the requirements done, because you can't ever find for solutions or resources which are available, because not all libraries are accessible out there. So I'll say go to Google, type the document library which you want to do function with, apply over there, read the documentation, and that's gonna help you out over there. Next is the stats. Stats is one of the most important things which I consider as for data analysis, because it consists of various topics like your hypothesis testing, Z testing, T testing, and all of these topics in the way that we study in stats and probability helps us to increase our accuracy out there even. So the next one is that I did this stats from majorly from IITM resources, and many of them were from video or YouTube videos even. So what I have done for you guys, because the IITM resources aren't available, so what I have done is that I have written various Kaggle Medium blogs for which you can refer to us. I'll be sharing the resources at the end of the slides. You can refer those Medium blogs and they will help you out. So just refer to those. Moving on, next is my machine learning. Machine learning, I didn't attend any of the Startup summer schools or so. I did that from YouTube, or there's a famous course by Andrew Ng, Stanford University. He's a course of Stanford, professor of Stanford. It's available on Coursera. It's basically a machine learning course which has divided into 3 parts. One is the supervised learning. Second is the advanced data algorithms. Third one is the unsupervised part. Go explore all these 3 courses and get the certificates even from there, and side by side you will get the experience or how a course needs to be taught, or it can help you out even later on. Next is every person needs to have a mentor out there, because if you have a mentor, that mentor is going to be the path that you want to follow, which that mentor follow to reach that end goal. If you don't have a mentor, make one and just go on with the path that the mentor followed. Sharing with you, my first mentor is my Ruchi Bhatia. Though I have never contacted with her, but for sure, she is one of a hell of a mentor, because her resume says it all, her portfolio website says it all, her Kaggle profile says it all. For her, she did her graduation in engineering from University of Mumbai, and then she went on to do her master's degree from information system management from Carnegie Mellon University. She was the youngest, or I'll say she was one of the Indians who was selected as 21 data science ambassadors for Z by HP. And being so young and being selected for this is a great achievement for her. So let me share her portfolio website for her. You might this might help you guys to refer out what she all did. Just a second, it's getting loaded over here. Yeah, I guess it's loaded. So we wait for the time that it gets loaded. Till then time, I show you the Kaggle profile first. See, she's the data sets grandmaster, notebooks grandmaster, discussion grandmaster. I'll surely come to you guys to go in for her discussions, because she's going to teach you various ways how to approach a problem, or she might have written, or she has written various techniques which you can do for your EDA or the problems that you face in your day-to-day life even. Then I'll let me see if I have got the access to her portfolio website. It's not loaded yet. All right, I tell you some of her skills. She has done these skills like programming languages of C, C++, Java, Python, SQL. Apart from it, web HTML. In web, she has done HTML, CSS, Bootstrap, PHP. What I am trying to say over here is that what main reason behind me showing you her portfolio website was that her portfolio website consists of various work experiences,
and those work experiences are a motivation for you guys to learn from. Right from the basic, from a startup, working in a startup as an intern, to working as a in a job in US Army, then to as a by HP as an ambassador, going for keynote speakers over there is a tremendous job for her. Moving on to my next mentor is Abhishek Thakur. He did his BTech from NIT Surat. At the moment, he is working as currently working in domain of open source in Hugging Faces. You guys might be familiar with Hugging Faces, I guess. Hugging Faces is basically a website which consists of all the pre-trained models and basically consists of pre-trained models, data sets, which you can use to gain over there. This person is working over there to learn his auto ML, training his auto ML models over there in Hugging Faces. His GitHub profile is a tremendous job, and I wish that you guys see it. Let's hope that it gets loaded. Yeah. You guys might go into his repositories. You might see what all jobs he has done, and I'll say go and explore each one of them. It's gonna be a help to all of you guys. This repository of Approaching Almost is one of the books that he has written. This book is gonna help you out. I'll provide the whole book at the end of the resources website slide. This consists of all approach to how to approach an ML ML problem. Any of the ML problem, read this book once. You might know many of the equations, you might know many of the problems, but I'll say just read it once because you will gain knowledge out of it at the end of the day. And in terms of Kaggle profile, he is one of the first, or I'll say as many of the first persons who has received the title of a 4 times Grandmaster. You can clearly see his rank holders being a 1 in Notebooks Master, 2 in Dataset Master, 3 in Grandmaster competitions, 2 in discussions. I'll say going for his notebooks because his notebooks are way too easy to explain and they are self-explanatory, and I'll say you're gonna explore a lot from it. And even though you will learn from it. Moving on next is all about Kaggle. So what Kaggle is, what Kaggle means, and how we're going to proceed onto it is the way to it. I hope everyone has registered from the previous session that we have asked to register in Kaggle. I hope you guys have registered for it because I'm going to discuss advanced level of it over here. So there are 4 levels in Kaggle. One is novice, second is contributor, third is expert, then master, then grandmaster. Sorry. Novice, as soon as you register yourself, you become a novice. Then contributor is as soon as you give yourself an upvote, give an upvote, do a discussion, or even if you do go in for run a script or participate in a competition, that makes you to a contributor. The task that lies is from going from a contributor to an expert, because that involves getting various bronze medals. Those bronze medals include getting votes, and every vote counts over there to get a bronze medal. 1 bronze medal you get after 5 votes, then 20 votes gets you 1 silver medal, 30 to 50 votes get you 1 gold medal. And while you are an expert level, there are 4 categories that are divided into: notebooks, data sets, discussions, and competitions. You can be expert in any of these 4 categories by achieving the various requirements for it. I'll show you the guys' requirements for all of these. Let me show you guys over here. Yeah. Just a second. All right, so let's close my profile over here. I'm going to talk about the medals over here. See, so being an expert, you need 3 bronze medals in data sets, 5 bronze medals in notebooks, 50 bronze medals in discussions, and 2 bronze medals in expert. Similarly, for going from expert to master is one hell of a job, as you need to get 10 silver medals in notebooks, 1 gold medal in data sets, 4 silver medals even as a requirement, and it keeps on going till grandmaster like this. Apart from it, I'll say as this is what is necessary to get a bronze medal, like that is 5 votes to get a bronze medal, to 20 votes to get a silver medal, and 50 votes to get a gold medal. And it keeps on going like this day to day, on and on. So moving on next, these are the list of various competitions that I've listed over here for you guys.
The beginner level competitions that I have listed over here are some of them which you have already guys made a submission to, and I wish that you make a proper submission to it and grade the accuracy and bars over there. But the main thing I want to tell you from these beginner competitions is that don't get disheartened by the accuracy that you get for the first time, or even the rank, because you have a long journey to go from where you are to what you have to achieve. Don't get disheartened. Be happy that you achieved a one target or one step to moving ahead with it. What I'm going to tell you is, apart from these beginner level competitions, what competition I'm going to refer to you as to move forward are petals and metals. This competition is one of the competitions which I'm going to use or I'm going to practice in my summer vacation, because it helps me to learn one more thing, that is how the TPUs work. So I'm sharing about you this competitions profile over here. This is what the competition looks like. TPUs are basically tensor processing units. These help in like deep learning tasks and all that. So I'll surely come to you first, explore the GPU versions, then go in for TPUs. But apart going to the advanced level, before that, clear all of your basics. Because clearing of basics is a main important thing that you require to go ahead with it. If you talk about my journey, in my journey, what I did was clear my first basics. Then I went for notebooks, so that by doing various notebooks, I learned how to go on with things, how to process data, how to do feature engineering, how to do an ED of the data, then apply algorithm to it. Go from basic beginner level algorithms or beginner level competitions, moving on to swag competitions, and then on to the next advanced level. There are various competitions that are present. Many come, many goes, and many of them are paid even. Participate in them because they're going to help you to achieve it. Even though you don't get a rank, don't get disheartened about that. I'm not getting a rank, I'm not worth it. But you are surely worth it, because whatever opportunity that comes in front of you, just grab it. You don't know which opportunity is meant for you guys. All right. So keep on going over there, keep on practicing, keep on taking every opportunity that comes your way. Moving on next, advanced level. First, petals to metals I have discussed. NLP disaster. I have listed NLP dataset over here as one of the most important. Why? Because see, your CV should not consist of just one kind of data, that is tabular data. It should contain your time series even, it should contain your NLPs even, it should contain of a GAN model even, it should contain of everything. It should be a combination of every type of data set. Because if you show that you have specialization in NLP, the recruiter is going to judge you that you don't know other skills. Sorry. So what I'm going to say is, please make your CV all-rounder instead of just focusing on one topic out there. That's why the next competition is a time series competition, that is store sales. A time series competition is a competition that goes, which has a data which keeps on adding day by day, or it keeps on happening. The data that we are using in Titanic, our house prices, is tabular data, that is stagnant data. So what I'll say is, after getting a command on stagnant data or tabular data, go on for store sales. Because this time series data is what is going to help you to achieve various competitions even ahead. And another example of this data set of time series is stock prediction. This is really going to help you. And I might say those who aim to go in for the stream of financial analyst or business analyst, stock prediction is one of the main things that you should know over there. Moving on next. There is a Kaggle datasets. Kaggle consists of more than 50,000 datasets. So you don't need to add many of those datasets over there. But what I'll say is, even after exploring all of those 50,000 datasets, you don't find dataset that is suitable for you, go to a website or go and add your own dataset over there. What I can recommend you guys is an IEEE website. This is a website which consists of various datasets. You can go over here, choose which domain or which dataset intrigues you or on which you can actually work upon. This is totally a website for datasets which might not even exist in Kaggle. But first, basics, then to advanced. So
explore Kaggle, moving on to next resources, before moving on to next resources. Coming back over here, Kaggle is not just limited to being a part of a competition or being a part of a discussion part or adding a code over there or adding a data sets over there. Kaggle is all about learning even. I'll say learn from Kaggle even because you can get a certificate from Kaggle, and that certificate is as good as a Google certificate because Kaggle has Google as its parent company. So I'll say whatever courses that you do, wherever you do it, get a certificate because that's gonna represent how you do it, and that's gonna be a proof of that you know the skills. Instead of being just knowing it and showing that you know it is no sense. Prove it with a certificate, that's gonna be worth it. These are some of the important graphs that I've added over here. These I'm going to share from the GitHub repository over here. Let me open my GitHub repository. Oh, okay, so I'll open over here. All right, so the TSS resources. Okay, first of all, I'm going to share you an image of a roadmap to becoming an ML engineer. This roadmap consists right from starting, that is learning Python, R language, Java, Kotlin, and this CUDA is basically all about GPUs. Explore this Python, then move ahead to other things like mathematics consists of linear algebra over here. See, linear algebra, probability stats, OT is another important thing for ML because sometimes you have to create your own sigmoid functions or other functions which are needed for mathematics over there instead of relying the predefined functions. So knowing calculus, linear algebra, all of them are equally important. All right. So like in the previous session that you heard, data structure, algorithms, database, lead code, practicing on lead code, hacker rank, everything is important. This is a whole map for all of it. So you can approach the program. All right, so this is a whole map. You can learn wherever you get stuck, find yourself in which position you are and get deeper into the model. And end goal is to become a fully successful ML engineer. Moving on next is approaching an ML problem. See, the ML problem is not just limited to getting a data set, applying ML algorithm over there. What approach that I follow is first get the data set, open the EDA, check for all the NaN values, and then do all the graphs over there and see what all things that we learn from there. All right. So then after the EDA, go in for feature engineering, applying MySQL commands for concatenating data sets, everything over it, and even synthetically generating a data set for your own, adding weights, adding biases to it, everything adds to it. Then is splitting the data set and deciding whether the data set is numerical, categorical, test data, or whatever, then applying algorithm to it. But first and foremost is a hyperparameter selector over here. Hyperparameter tuning is one of the critical moments which can help you to achieve a level or raise the bar of the accuracy. One is hyperparameter tuning, one is assembling. These two are things which are going to raise the bar for any of the model over there. What I'll say is, you can approach anyone on an advanced level, go to Hugging Faces or create an own model of your own, take a pre-trained model, train it according to yourself, assemble them and raise accuracy. And that's going to be the next paper that you're going to publish over there. This is how research works. Then all about the ML model selector that we use, then we get the output of the desired results that we require. All right. So stats, graphs, and functions. This is basically a graph that we use, stats, functions that were there, like ReLU, rectified linear unit that we usually use this function over there, pre-ReLU or ELU, this is our functions. This is a function command that is required over there, the derivative of it, how it works is all up plus point over that I have provided you the image over here. Coming back to resources, I have combined the whole of the resources over here. What I'm going to do is, like I said in the starting, I have provided some resources for you guys in this for stats, because IITM resources aren't available to everyone. So what I have done is written a Medium blog. Let me show you that Medium blog. This is the whole Medium blog.
It consists of various topics, that is understanding the type of analytics, probability, central tendency, variability, everything of it. It's a 7-minute read, and I'll be adding more to this series of statistics. So keep on reading them, and you might get to know what stats help you with. If you want to go in for in-depth, total depth, then I'll say go to YouTube videos. Even they are gonna help you out. Like base theorem is mentioned over here in a brief, the formula along with it, how skewness is measured, variability, what is interquartile range, Q3 minus Q1, Q2 is the median over here. Then what is population? Population is the n, where we take n samples, and sample is where we take n minus 1 samples. So it's all about this. I have given you the covariance, how to calculate a covariance or correlation, and then what is a positive correlation, negative correlation, and what is no correlation even. Apart from it, PDF, CDF, these terms might be new to many of you, but I'll say go into the depth of these terms because they really help you out while doing data analysis. Moving on, next is most important thing is this from discrete probability distribution. Bernoulli distribution, Poisson binomial distribution. These are kind of distribution which you're going to learn in data analysis, and it helps you in one way or the other determining what kind of a graph you are having over here. Hypothesis testing is another type of testing where you're going to calculate the type 2 or type 1 errors. This is where the errors occur and how you're going to achieve the accuracy from here, theoretical non-null value, null values. Like this is basically a kind of your false positive, false negative, true positive, true negative graph, and this false positive is a type 1 error, false negative is your type 2 error, which is known as beta. So you can go into in depth of it even and learn from there. Like this is what I had referred to as Z test. Z test is, I say, as one of the most important tests. All right, so learn about it. How you calculate is from by subtracting the object or observation from the mean and then dividing it by the number or by variance divided by the root of the number of observations present over there. Then T test is calculated from Z test, which is like P of T is equal to like P of Z over there. So I'll say T test के calculators होते हैं हमारे पास, but still know what is the basic funda for it. Understood, guys? Then for linear regression, this you guys have already done. And still, if you want to read about it and learn, I'll say go ahead with it, because ChatGPT is not going to be there for you guys to learn. You should know these formulas even. Like our professors, our mentors, they never ever they depend upon ChatGPT or so, because the recruiter is not going to ask you to open a ChatGPT and tell what is the formula for linear regression. So have a model, keep it in your mind and depend upon it, because knowledge is what is going to help you instead of depending on the ChatGPT out there. Because if you're providing a ChatGPT, Bard is even there, every LLM models are there. Either go into create a one for yourself or be dependent upon the knowledge that you gain. Going ahead with it is like, I'll say models की approach जो करनी है ना आप लोगों ने, as easy as that. What I'm going to say is keep the model, categorize it under supervised, unsupervised, keep a list of the models that you know, apply it, because ChatGPT ने आपको एक basic model provide करना है, उसने आपके requirements के हिसाब से model कभी provide नहीं करना है. उसने model provide किया, फिर model में उठाया और उसको accuracy करो कि increase, कोई फायदा नहीं होगा उस accuracy को increase करने का, because that model which is providing is not at all useful for you guys. Because when you are into a job sector or corporate world, they're going to ask you about certain specifications, and ChatGPT doesn't work over there. Yeah, resolving some errors to some extent is necessary. And why I'm saying is don't go in for ChatGPT or any of the sources like this. The main reason is, let's see, when you go search online, you learn a lot many things. You learn, like if you're approaching a problem, you might learn 4 to 5 more models which you might not have known. While exploring, you might explore these 4 5 models even. But ChatGPT का काम है भाई आपको एक end result और एक answer देना. उसने एक answer देना है, गलत देना है, सही देना है, वो आपके ऊपर है. उसने model को provide कर देना है. आपने सीधे वो रट्टे की तरह लगा देना है. This is not what coding means, and this is not what coding has to mean. इसलिए explore करो, जितना explore करोगे उतना आप gain करोगे knowledge, and that is what is going to help you out in developing a skill set. All right, guys. So this is what I have to provide you guys with.
any of those questions out there. So turn off your mics, unmute them. Let's come on normal talk, like one-to-one. Let's see what we can come out of solution as. Any one of you. Any one of you have guys doubt? Any questions to be asked? Okay. I applied for IITM through the IITM direct like website over there. They have the course portal as BS Data App Sciences and Applications. The applications for those open at every term. You can even apply for them. Anyone else? What is the internship process for becoming a ML engineer or a data scientist? See, the basics start from DSA. It goes from DSA, it goes up to the level of being an interview. And in interview, they're going to ask you what the projects that you have done, what all ML models you have applied, and mind it, whatever models you're applying over there, you should know why you're applying it and why you're not applying the other models to it. If you have answers to these two questions, I'll say कि भाई आपके recruiter का basic question यही होता है, क्यों apply किए, क्यों दूसरा model apply नहीं किया है, और इसके better हमारा वो आपको एक और model बताएगा, बोलेगा ये model की better accuracy है कि आपने ये apply कर सकते थे. Then why didn't you go for that approach? वो आपको बतानी पड़ेगी. Keep your approach clear over there, why you applied it, why you didn't apply the other approach to it. And I'll say is they go into the depth of a code. They might ask you why that equal sign to is there, and that is going to be necessary to answer over there even. Clear to Aisha? Is Yes, it thank fine? No problem. Anyone else? Guys, unmute yourself because this is the time we're going to have. After that, I might not be available or you guys might be busy in your stuff. This is the time that where you are learning, where we are having a one-to-one interaction. Come up with the questions. It might not be relevant to any of it. It might be silly to others. But it might be important to you. So that is what depends. It might clear a doubt because I was in that position sitting over there. I had my doubts. I made one of my mentor. I cleared his doubts. And mind it, ChatGPT, BART, any of these models are not any of your professors or mentors can provide. Go reach your professors because they're going to be available 24/7 to you. And ChatGPT भैया कुछ नहीं है, वर्ड लिमिट प्रोवाइड कर देता है, फिर पैसे दो देगा. यहाँ पर मुफ्त की नॉलेज मिलती है सर से, मुफ्त की नॉलेज दिया करो बैठ के. मुफ्त का ज्ञान जितना मिलता है वो लो. And how to approach or get a mentor, LinkedIn बहुत बड़ी चीज है. जाओ अप्रोच करो, को आपके नोन में है उसको अपना मेंटर बनाओ, जो काफी अटेन कर चुका है किसी लेवल को बनाओ. अगर कोई नहीं मिलता है, प्रोफेसर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. जो प्रोफेसर को लगता है ना कि भाई ये मेरी डोमेन का है और इसने काफी अचीव कर लिया है, go to that profession, ask that you are stuck in this level, and then how you're gonna come out of it and how you're gonna reach the success of it. Any more questions? Guys, any one of you guys? Yes, question please. All right, so thank you. Okay, Shigan, thank you very much. Thank you for the nice session. So class, today is the session जो Kaggle का आपके लिए बहुत important रहा है. The thing is that you need to make a constant increment approach in your knowledge. ठीक है, try जो चीज आपसे possible हो पा रही है. Read the blogs, mentor बनाओ, उनसे interact करो, and कुछ ना कुछ daily basis पे करते रहिए यार. So if you have any question, query, so let's take it after. Just give me a sec. So thank you very much.